So today's topic of nested and inner classes. What? Nest. Nest and inner Okay. So we classes. all are familiar with the term nested. Nested means one inside the other. So we have done nested if, that is one if condition inside another if condition. This is nested if. Then this is nested for. Yes. So we had done for in matrices. We would have nested for one for inside the other. Then in Java we also did nested try. We also did nested try in Java in exception handling. That was one try inside the other try. So on the similar note, can you tell me what is nested classes? Similar logic. Today's session will be a bit slippery. I want everyone to give 100% attendance. So what is this? One class inside the other. So what is that called as nested class, right? So now nested classes are of two categories. Nested classes are of two categories. One is static and one is non-static. So let's take the non-static first. So one is non-static inside class and the inside class is static. So over here B is static or non-static? Class B is static or non-static? You there guys? Yes, sir. In this first example over here, class B is static or non-static? And in this example, it is static or non-static? Tell me. So in example 1, it is static or non-static, and in example 2, it is, tell me. I want you all to communicate. Today's topic is very slippery. So in example 1, the inner class is static or non-static? So non-static. So this example belongs to this group. And in over here, the inner class is static or non-static? Static. So this example belongs to this group. Okay. And in non-static, we further have three categories. In non-static, we further have three categories: inner, local inner, and anonymous. How many category do we have in non-static? 3. Namely, Inner, local inner, and anonymous. anonymous. ठीक है? So we'll be studying these 4 types. इसमें से ये थोड़ा सा और slippery है तो इसको मैंने exclude किया है. But we will have examples of these 3: inner, local inner, and static. Let's start. So let's start with the first type. Which is the first type? Inner. So if they ask what is difference between nested class and inner class, what will you tell? Inner class is a type of nested class, okay, but it is non-static. So all non-static nested classes are called as inner class. How do you define inner class? What is the definition of inner class? Tell me. Definition of inner class.
Here, I have written it over here. Read from here. All non-static classes are called class. Come again, ma'am. Once again. All non-static nested classes are called inner classes. Yes. So if the inner class has to be non-static. Okay. So now let's take example of inner class. So will I be using the keyword static for such classes? So see over here. Is this diagram explained? Nested classes are of two types, non-static and static, and non-static of two types, inner, local inner, and anonymous. So let's start with the inner class first. So if we take examples of the state and city, what should be the outer and what should be the inner as per your understanding? Tell me. So if I take Maharashtra and if I take Maharashtra and Pune, so if I have Maharashtra as this rectangle, So Maharashtra is outer class and Pune is inner class. Pune as the oval. So my outer will be Maharashtra and my inner will be Pune. Yes. Clear? So I have kept these as the class names. So if you open the Word file which I just sent you all and come to this topic, inner class. It is inner class means what? What does inner class mean? Non-static nested class. Beautiful. And now let's take example of inner class. So let's take this example. I'll copy and paste this example in your Notepad++ so that we can run it. So tell me, which is the outer class over here I have used? Name of the outer class is Maharashtra. Then that contains the data type. Data member, no. What is num? What is num? Data member. Of which class? Of Maha. That is the outer class. Then see guys, outer class cannot be private. Outer class cannot be private. This will throw you an error. Can outer class be private? No. But inner class can be private. Inner class can be. So and now I made an inner class by the name of. What is the name of the inner class? Pune. And which method does the inner class have? What is display Pune and what is it printing? I am in Pune. Okay. And now what ends over here? The inner class has ended. Yes or no? Yes, sir. So display Maha is of which class? Display Maha function is of which class? Class. So if I want to use this class, what do we do? If we wish to use a class, what do we have to do? If I make a class student and I want to use the class student, what do I have to make first? कौन कौन है आज सेशन में? ये लोग सब शांत क्यों बैठे हुए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अगर एक क्लास बन चुकी है, अगर एक क्लास स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट क्लास को यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा उस स्टूडेंट क्लास का? सबसे पहले यस विद्या, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. उस क्लास का ऑब्जेक्ट. तो क्या करेंगे? डिस्प्ले माहा में जाएंगे. तो डिस्प्ले माहा में जाएंगे और पुणे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. पुणे इनर इज न्यू पुणे. तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? इनर. और उस ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं? हम उस क्लास के फंक्शन कॉल करते हैं. तो इनर कौन से क्लास का फंक्शन है? तो पुणे का फंक्शन कौन सा है?
तो वो उससे कॉल करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्लोज हो गया, डिस्प्ले माहा, और यहाँ पर क्या क्लोज हो गई, फिर लाइन नंबर 19 पे क्या क्लोज हो गया, आउटर क्लास। इनर क्लास तो यहाँ क्लोज हो गई ना, इनर क्लास तो इतनी ही है बस, लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 11 तक, उसमें एक मेथड ही है सिर्फ। तो और फिर क्या क्लोज हो गया लाइन नंबर 19 पे, आउटर क्लास। और फिर हमको जाना है मेन के लिए, क्या करना है, तो उसके लिए अलग से फंक्शन बनाया void main। अब किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन में, आउटर क्लास। तो माहा का ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से, आउटर। और फिर आउटर से क्या कॉल कर लिया, डिस्प्ले माहा। तो डिस्प्ले माहा इधर आएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसका फंक्शन कॉल कर रहा है। तो आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का, प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा इसका, इफ आई रन द प्रोग्राम, सी इज लाइक पासिंग द पार्सल। माई क्लास पे मैंने किसको ऑब्जेक्ट बनाया, हेलो, आर यू गाइज देयर, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल, तो बात को फिर गड़ा बैठ जाओ, फिर इकट्ठा आ गया तो इकट्ठा करके बात करना, ज्यादा भी होगा, ज्यादा भी होगा। There's some problem with the Zoom, so I'll get this rectified. Meanwhile, I'll upload the video. कितने दिन से यूज किया है Zoom लोगों, अचानक क्या हो गया इसको, अच्छा फायरवॉल आ गया इसको। तो बंद कर दे कहीं ना कोई नेट ना, बोला कि बंदी बोलना भी करना। भाई दोस्तों से बातें मत करो प्लीज। सर आप
लेक्चर ले रहे हो? यस यस ले रहा हूँ भाई। वो हॉटस्पॉट बंद हो गया था बीच में, अचानक हॉटस्पॉट बंद हो गया था अचानक। ऑल ऑफ अ सडन हॉटस्पॉट बंद हो गया था, इसकी वजह से दिक्कत आ गई। समझा क्या तुम लोग को अब तक का सेशन पूरा क्या चल रहा है? हाँ सर। थोड़ा स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। ठीक है चलो लेट्स रिज्यूम। सो